Morning students, so let us start exercise 9.2. Exercise number 9.2. We already had order and degree of differential equation in last lecture, and also solution. There are two types of solution. First one is the general solution and second one is the particular solution. Okay? So in general solution, I have already told general solution and particular solution. If we have given a solution of a differential equation like a cos x plus b sin x or a power x plus b power x, suppose, then this is the general solution because there are arbitrary constant a and b. But if you have given some values to arbitrary constant like 2 cos x plus 3 sin x or any other solution, then it is known as particular solution. Okay? So in exercise 9.2 we have to find either given value is the solution of a differential equation or not. So as in quadratic equation, you already know about the the value of x is either solution of a quadratic equation or not. In the same manner, we have to see here the given value is the value of y is the solution of the given particular equation or differential equation or not. So suppose we consider question number 4. Okay, y is equals to, see, exercise 9.2, in each of the exercise 1 to 10, verify that the given functions, explicit or implicit, is a solution of a corresponding differential equation or not. Okay, so y is equals to root of 1 plus x square. And what is differential equation? Y dash is equals to xy upon 1 plus x square. ओके, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि क्या ये वैल्यू y की इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं. सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? आइदर यू कैन फाइंड y dash and put here an LHS and RHS of this equation are same, then you can say this is the solution of the differential equation. ओके, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सोल्यूशन नहीं है. ठीक है. एंड अनदर मेथड इज दैट आप फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड दिस इक्वेशन. ओके, सो सी, इफ वी राइट इट एज अ फर्स्ट सेकंड, गिवन दैट y is equal to root of 1 plus x square, and if we differentiate it, then y dash is what? So first of all, you just find it y square, squaring on both sides. So differentiation is easy. Yes. Okay. So what is the differentiation of this function? 2y y dash is equals to 2x. Yes, okay. So this is nothing but 2 cancel out. Y dash is nothing but x upon y. See, y dash means what? dy by dx. So y dash is equal to what? X upon y, and here what? xy. So multiplying in numerator and denominator by y, we get y dash is equals to xy upon y square. And what is the value of y square? Y dash is equals to xy upon 1 plus x square. So this is the, so this particular value of y is the solution of the given differential equation. So equation 1, so equation 1 is solution of what? Equation 2. That means given differential equation. Yes, tell me. Y square. 2y dash. Yes, this is the differentiation. What is the differentiation of y square? Implicit function पढ़ा होगा differentiation का.
वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वाई स्क्वायर का 2y एंड y का y डैश. y डैश मीन्स व्हाट? dy by dx. y डैश मीन्स व्हाट? dy by. तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2y dy by dx. So this is nothing but 2y dy by. Okay? डबल डैश रहेगा तो Second derivative. This is the notation. Now question number 6. Question number 6. Y is equals to x sin x. Y is equals to x sin x. Then prove that xy dash is equals to y plus x under root x square minus y square. X does not equal to 0, x greater than y and x less than minus of y. Now see this question, okay? In this question also, if you want, you can put the value of y dash, that means dy by dx, in LHS of this equation. And if this LHS is equal to RHS, then this particular equation is the solution of that particular differential equation. Either you can find this particular equation from this equation. So whatever you want, you can do. So it is easy to find this from this equation. So given that y is equals to x sin x, okay? So y dash is equal to first function derivative of second function plus second function, okay? Yes, sir. And derivative of first is 1. है कि नहीं बेटा? ये क्या है? x sin x है. First into second, second into first. Now from this particular equation you see, if you find y by x, then it is sin x. Huh? So what is the value of cos x? Cos x is nothing but root of 1 minus x square y square. Y square by x square. क्यों बेटा? Yes, sir. कैसे? Because of y by x is sin x and cos x is nothing but root of 1 minus sin square x. Root of 1 minus sin square. Sin x is what? Y by x. So 1 minus. So this is nothing but cos x and this is nothing but x square minus y square. और अगर इसको रूट से बाहर करें तो अपॉन. Clear? And sin x is you know very well. Y by x. So put these values here. So y dash is x root of x square minus y square upon y plus y by x. See, cos x is what? This one. So यहाँ नीचे y x स्क्वायर आएगा. Sorry, x. Sorry, x. So this is x only. Clear? Now we need to find x y dash, no? So no need to cut it out. Okay? Directly you write it y dash is equal to x और ये क्या हो जाएगा बेटा? y plus x under root x square minus और ये x इधर मल्टीप्लाई. So x y dash is what? y plus x root of x square minus. Now this is the solution. तो क्या हुआ? एक ही उसी कर्व से हम ये चीज डायरेक्ट ला दी. तो ये आसान और मतलब अच्छा और स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है ना? और वो पुट करना, आप y डैश निकाल के पुट करो तो हो सकता है प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो और वो चीज ना भी मिले, मतलब दिक्कत होगी. अगर ये ना आए तो ये आएगा, 100% आएगा अगर सोल्यूशन है. इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, then from this equation you must get this particular differential equation. Okay? अगर सोल्यूशन नहीं है तो नहीं है. कितना भी कोशिश करो. चेक करने के लिए देता है कि solution- चेक करने के लिए कैसे देता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x की वैल्यू 1/2 देता था, बोलता था शो करिए कि इसका जीरोज है या रूट है या सोल्यूशन है. तो क्या करते थे आप? उसको उसमें रखते थे ना, तो LHS RHS सेटिस्फाई हो जाता था. इन द सेम मैनर दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट मीन्स इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y dash and put in this particular equation, if it is true, that means this is the solution of this differential equation, then it must satisfy this equation. So true तो आ गया, फर्स्ट कैंसिल करेंगे. अगर नहीं है नहीं है तो ये नहीं आएगा. नहीं है.
कितना भी कोशिश कर लीजिए आप, ठीक है। या फिर आप वाई डैश निकाल के रखिएगा, बोलिएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RH। ओके, सो नोट इट डाउन। कौन सा और बता दो बेटा, नेक्स्ट कौन सा? ये 11th and 12th, see, I had already told you the number of arbitrary constant, okay, is equal to the order of the differential equation। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितके सोल्यूशन में है ना, जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन वो। दैट मीन्स द नंबर ऑफ सोल्यूशन, the number of arbitrary constant present in the solution of the differential equation is nothing but the order of the differential equation। So यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, the number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of fourth order are। Okay, so 1 2 3 4 D option is correct। क्लियर है? सब बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। क्लियर? अगेन, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन हैव नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड राइट नाउ एंड ऑल्सो yesterday in studies videos also, okay। So the number of arbitrary constant in a particular solution of a differential equation of third order is 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो 11 12 हो गया। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, सपोज टू बी क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस y is equals to tan inverse of y, then equation is given y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0। That means the above equation is solution of the what? Second equation। So it is given that solution given x plus y is equals to tan inverse of y, okay। You know the differentiation of implicit function? Differentiation of implicit function, that means differentiation of this function, okay। x का क्या होगा बेटा? 1 plus y dash 1 upon 1 plus y square into y dash। This is the differentiation, okay। Now see, this is the y square y dash, so we just multiply here 1 plus y dash into 1 plus y square is equal to y dash। Yes sir। है ना? Only multiplication। So 1 into 1 1 plus y square plus y dash plus y dash y square। आता है मल्टीप्लिकेशन करना ना? y डैश दिस इज कैंसल्ड आउट, ओके। तो ये क्या आ गया? y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना इजी आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, y dash cancel, but y dash no problem, the same thing है। and this is what, ये वाला y dash इक्वलिटी इधर इधर कैंसिल होना ही, ओके। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, y is equals to root of a square minus x square, x belongs to minus a, then you have to show this is the solution of differential equation x plus y dy by dx equal to 0। x plus y dy by dx is equal to 0। This can also be written as x plus y y dash। Yes sir। x plus y y dash is equal to 0।
है ना? This can also be written as x plus y by x. Clear? So given that y is equals to root of a square minus x square, so y square is equals to a square minus x square. See? So 2y dy by dx पता है ना? minus 2x, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है? ये इधर आएगा तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है? So maybe maximum question I have to solve here, and next topic I have to teach you tomorrow. Okay? So complete exercise 9.2 up to 9.2, and formation of differential equation we are going to see tomorrow. This is not in your syllabus, formation of differential equation. Okay, instead of this I am teaching you. This is deleted.